Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of NDA Maths PYQ है ये अप्रैल 2026 का क्वेश्चन है and the interlinked question है. There are three questions are interlinked. So the question is basically based on the probability. So what is the question? For the next three items that follow, let A, B and C and D be mutually exclusive and exhaustive events बोला गया है. Then PA by 2 equal to PB by 3 equal to PC by 5 equal to PD by 8. Then we have to answer this question here. Basically, what is PA plus PB plus PC, right? The second question is what here, the 2 times PA plus 3 times PB divided by 4 times PC plus 5 times PD is equal to, and the third one is basically G is the geometric mean of PA and PB, PC and PD. Then what is 9G, right, equal to. So to solve this question, just I explain the concepts here. Concept क्या है यहाँ पे कि अगर मैं बोलूँ कि A एंड B टू इवेंट्स की मैं बात करूँ, A एंड B की बात करूँ मैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देन व्हाट इज दैट A इंटरसेक्शन B जो है आपका क्या हो जाएगा फाई, और A यूनियन B जो है वो क्या हो जाएगा S. इन दैट केस प्रोबेबिलिटी जो है PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है P5 विच इज 0, एंड PA यूनियन B जो है वो सैम्पल स्पेस PS हो जाएगा, एंड PS इज बेसिकली व्हाट 1. एंड वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी फार्मूला जो है यहाँ पे PA यूनियन B का मैं बात करूँ तो दैट इज व्हाट बेसिकली PA यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं, तो PA प्लस PB राइट माइनस व्हाट PA इंटरसेक्शन B. तो वी नो दैट PA यूनियन B जो है मुझे एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव के केस में ये हमारा 1 है, सो वी कैन राइट हियर 1, and this is what PA plus PB, right, PA plus PB, and this is 0. So PA plus PB जो है that is equal to 1, right. So when it is about two events, mutually exclusive and exhaustive, for three events, right, for three events A, B, C, suppose for three events A, B, C, then it is what, if these three events are mutually exclusive and exhaustive, then we can say that PA plus PB plus PC, right, PC, and this is equal to what 1. and for four events की मैं बात करूं, अगर फोर इवेंट्स की बात करता हूं मैं, इन दैट केस फोर इवेंट्स जो है ABCD, राइट, ABCD की मैं बात करूं तो इन दैट केस अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, देन PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, राइट, ऑल सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा व्हेन इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. Now here what we have given, so PA, you can see here the PA by 2, right, PA by 2 equal to PB by 3 equal to PC by 5 and equal to what, PD by 8. So I just assume this is a proportional, so I just assume this as a K, right. PA जो है हमारा क्या हो जाएगा 2K, so we can write here the PA जो है वो हमारा क्या हो गया 2K. PB जो है वो क्या हो जाएगा, PB इज योर व्हाट 3K, राइट, PB इज योर 3K. PC इज योर व्हाट, PC जो है वो हमारा 5K हो गया, एंड PD की मैं बात करूँ दैट इज व्हाट 8K, राइट, 8K. एंड वी विल जस्ट यूज दिस वैल्यूज ऑफ PA PB PC इन PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD इक्वल टू 1. इसमें हमने क्या करना है, इस वैल्यू को यूज कर लेना है, पुट कर देना है. सो वी कैन सिंपली से 2K प्लस का 3K प्लस का 5K प्लस का 8K इक्वल टू व्हाट, ये हो गया 1. सो नाउ यू कैन सी हियर कि ये क्या हो जाएगा, यू कैन ऐड दिस ऑल, सो ये हो गया 2 प्लस 8 10 हो गया, एंड 3 प्लस 5 ये हो गया हमारा कितना 15K, राइट. सो 15K इज 18K, बेसिकली 18K, 5 प्लस 3 इज 8 एंड 2 प्लस 8 इज 10, सो 18K इक्वल टू 1. सो K की वैल्यू क्या हो गया 1/18, राइट, K की वैल्यू हमारा क्या हो गया 1/18. But we are asked here to find the PA plus PB plus PC. So we'll find here the PA plus PB plus PC की वैल्यू मैं find करता हूँ. तो PA is what basically 2K and this is what 3K and this is what 5K. So when we add this all, so what do we get, 10K, right, 10K. So 10 and K की value we have determined, that is 1/18. So if you simplify this, cancel this by 2, so this is what 5/9. Right, 5/9. So option for the first one, this is 101 question number basically according to the question paper. So it is 5/9. So A option is the correct option. Okay, 5/9.
Let us see the next question. So related question, interlinked question. So 2PA. So PA is basically what? 2K. And what is PB? PB is what? 3K. PC is what? 5K. So I write here the 4 into 5K. Okay, 5K. And 5D, 5 times PD. So this is what? 8K. Okay, simplify. Just simplify this. This is 4K plus 9K. 4K plus 9K. This is 20K plus 40K. Okay. So we get here the 13K divided by 60K. Okay, so K and K get cancelled. So this is basically 13 by 60. 13 by 60. So 13 by 60, B option is the correct option. Now talking about the third part, third related questions जो है वो interlinked question क्या है हमारा? G is the geometric mean of PA, PB, PC and PD. Basically I just explain here the concepts for the geometric mean here. For two numbers की मैं बात करूँ अगर two numbers, right, टू नंबर्स ए एंड बी, राइट, टू नंबर्स ए एंड बी की बात करता हूँ मैं, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या हो जाएगा? ए बी टू द पावर 1/2. एंड फॉर थ्री नंबर्स की मैं बात करूँ, राइट, फॉर थ्री नंबर्स की बात करता हूँ मैं, ए बी सी सपोज, देन ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इसका? ज्योमेट्रिक मीन वुड बी ए बी सी होल टू द पावर 1/3. लाइक दिस अगर मैं n नंबर ऑफ जो है n नंबर्स की बात करूं, n नंबर्स, राइट, n नंबर्स लाइक सपोज x1 x2 टू xn की बात करता हूं, तो देन ज्योमेट्रिक मीन वुड बी व्हाट? हियर द x1 x2 x1 into x2 x1 x2 x3 so on to xn and whole to the power what? 1/n, right, to the power 1/n. So this is the geometric mean. Okay, so for four numbers basically here PA, PB, PC, so geometric mean is basically denoted by G here. So I will simply write the PA into PB into PC into PD, right, all this, and to the power what? 1/4. Now we know that the PA is what? 2K, right, 2K. PB is what here? The 3K. PC is here what? 5K, and PD is 8K, and whole to the power 1/4. Now you can see here the 2 and 8 is basically 2 cube, so we can write here the 2 to the power 4 into 3 into 5 in factorized form, right, and k to the power 4 and whole to the power 1/4. So power will be distributed here 2 to the power 4 to the power 4, 2 to the power 4 to the power 1/4. Here 15, 3 into 5 to the power 15 to the power 1/4 and k to the power 4 and whole to the power 1/4. So just simplify this. So this is what? 2 and 15 to the power 1/4 and k, right, k, and we know that the value of k, we have already determined the value of k, that is what here you can see here the value of k is what? 1/18. So we'll substitute here the value of k, that is what? 1/18, right, 1/18. So you can cancel this. So this is what? Basically the 9, right. So G equal to what? We get here the G equal to here 15 to the power 1/4 divided by 9, right, 15 to the power 1/4 divided by 9. We are asked to with the value of 9G, so just cross multiply. 9G is 15 to the power 1/4. So value of 9G is what? Basically 15 to the power 1/4. So B option is the correct option. Hope you will clear with the solutions. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.